The philosophy of social solidarity, which Ibn Khaldun called as Asabia, is central in his theory. We see that Asabia is the, let's say, central concept in Ilm al-Umran. He used Ibar as a critical thinking to understand the, let's say, political conflict, the social instability, and then later on might be leading to some kind of tranquility, stability, change. तो आखिर पर आकर हम ये देखते हैं कि चाहे कॉन्फ्लिक्ट की बात आ रही है, चाहे राइज ऑफ द डायनेस्टी आ रही है या फॉल ऑफ द डायनेस्टी आ रही है, तो इनमें जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है वो असाबिया की है. असाबिया की वजह से यूनिटी है, यूनिटी की वजह से वो कोई डायनेस्टी जो है या नेशन जो है वो राइज कर जाती है. उसमें असाबिया डिक्लाइन पे हो गया तो हम कहते हैं कि ये जो डायनेस्टी है या नेशन है या कोई कौम है उसका डिक्लाइन और फिर फॉल हो जाता है. दैट्स द काइंड ऑफ theory of social change which he has given. So we see that Ibn Khaldun reaches the theoretical construct of Asabia as an explanation for the rise and fall of dynasties, rise and fall of the nations. So for him, Asabia comes from blood relationships or something similar to that. So it's a unifying force for the community. So we see that the blood ties could be natural amongst the human beings. And we see that asabia or blood ties as a factor among all the human beings. There could be only rare human beings who do not have these blood ties or the, let's say, unity amongst the blood relatives. So we see there is a love and affection between the blood relatives. They have a direct relationship with each other. They help each other. They come to each other's rescue. They have some kind of unity. They usually have let's say primary relations. They usually have personal relations. They usually have face-to-face kind of relationships. So all this requires the existence of feeling of unity, cohesiveness, solidarity, and we see that this feeling is more like natural. So जब हम ये देखते हैं कि ये सारे रिश्तेदार हैं, तो ये रिश्तेदार ऐसे ही हैं जैसे एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड हैं. तो एक दूसरे के साथ जुड़े, ना सिर्फ जुड़े हुए हैं बल्कि ट्विस्टेड हैं. सो ये जो इनका आपस में कनेक्शन है, इट माइट बी इन एडिशन टू द ब्लड रिलेशन, कुड ऑल्सो बी द फिजिकल प्रॉक्सिमिटी. एक तो ऐसे ब्लड की प्रॉक्सिमिटी है, दूसरा फिजिकल प्रॉक्सिमिटी भी हो सकती है. सो दे हैव सम काइंड ऑफ बिलोंगिंगनेस टू ईच अदर. सो द फेलियर ऑफ सॉलिडैरिटी is actually decline for the let's say rise of the tribe or the society or the community. So there is a natural attraction or attachment or emotion amongst the members of the amongst the family. तो ये उसी किस्म का कॉन्सेप्ट है कि जिस तरह का डरखाइम ने एक कम्युनिटी कॉन्शियसनेस का दिया था या कलेक्टिव कॉन्शियस का उसने एक कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें कि कम्युनिटी टेक्स प्रायोरिटी और प्रेफरेंस ओवर individuals. Individuals might sacrifice for the sake of the, let's say, community. So we see that Asabia produces the ability to fight against any threats, to defend themselves against outside threats, any other opposition. And because of this solidarity,
they can also, let's say, fight for their claims, fight for their rights. So this is central. So we also see many other concepts similar to asabiya. So these asabiya could be translated as the vitality of the state, the life of the people, Lebenskraft, public spirit, spirit de corps, social solidarity, group cohesion, common will. ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं इसी एक असाबिया को ही लेट्स से रिप्रेजेंट करती हैं.